गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डोमेस्टिक क्रुएलिटी प्रोटेक्शन टू लिव इन कपल्स। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो प्रोटेक्शन डोमेस्टिक क्रुएलिटी के अंडर क्रिमिनल लॉ जो भी अदरवाइज मैरिड वुमेन को मिली हुई है, वो अब वुमेन जो कि लिव इन रिलेशनशिप्स में उन्हें भी एक्सटेंड की जा रही है। ये सेक्शन 85 के अंदर जो है BINS के अंदर ये प्रोटेक्शन मिलेगी। सेक्शन 498A IPC का जो इसका जो है प्रीवियस वर्जन था, उसमें एक हस्बैंड को या उसके रिलेटिव्स को पीनलाइज किया जाता था अगर वुमेन को वो क्रुएलिटी करते थे। तो ये प्रोविज़न में एक्सप्लिसिटली वर्ड यूज़ किया जाता था हस्बैंड, तो इसलिए जो है वो सिर्फ मैरिड वीमन या लीगली वैलिड मैरिज फीचर्स पर ही ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो पाता था। लेकिन ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए उन मैन को भी कवर कर लिया जो एक वुमेन को इंड्यूस करते हैं एक लीगली वॉइड या वॉइडेबल मैरिज में। तो अक्यूज़ जो हैं मैन मोस्टली क्या करते थे, सेक्शन 498A का मिसयूज़ करते हुए कहते थे कि क्योंकि मैरिज तो इनवैलिड है इसलिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था और कहा था कि मैन जो एक वुमेन को इंड्यूस करता है, उसको बिलीव करवाता है कि वो उससे मैरिड है, तो वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता वो मैन। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको और आगे बढ़ाते हुए एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ली है। कहा है कि लॉ का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो डोमेस्टिक क्रुएलिटी को बचाना था, इसलिए उसको सोशल रियलिटीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा नवी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम डिनाई कर देते हैं क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन एक कोहैबिटिंग वुमेन को, तो और एक हम मैरिड वुमेन को हम लेकिन ये प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसका कोई रैशनल नेक्सस नहीं होगा। ठीक है, तो जो पिटिशनर और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ने कहा कि अनमैरिड वुमेन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट किया, कहा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एक सिविल लेजिस्लेशन है और सेक्शन 498 जो है वो एक क्रिमिनल प्रोविजन है, दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता। अब इसमें इंटेंट टू मैरी एक की क्वालिफायर आ जाता है। कैसे समझते हैं? जो ये समझना कि लिव इन कपल्स जो है वो क्वालिफाई करते हैं इस प्रोटेक्शन के लिए या नहीं, कोर्ट ने कंसेप्ट को बोरो किया है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, जो कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से ही बोरो किया है। 2013 की जजमेंट को उठाकर कोर्ट ने कुछ फीचर्स माने हैं ऐसे रिलेशनशिप के लिए कि अगर ये फीचर सेटिस्फाई होंगे तभी हम जो है वो ये प्रोविज़न लगाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस का या क्रुएलिटी का। अब पूलिंग होने चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, शेयर डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स होने चाहिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, अब वो सोसाइटी में एज अ स्पाउस रहते होने चाहिए। कपल के पास एक इंटेंट टू मैरी भी होना चाहिए। बहुत से रिलेशनशिप्स बाकी सारे क्राइटेरिया तो जो है वो सेटिस्फाई कर देंगे ईजीली, लेकिन ये इंटेंट टू मैरी को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले इनिशियल जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो इंटेंट टू मैरी का वो फीमेल पार्टनर के ऊपर होता था, लेकिन जजमेंट ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये इंटेंट टू मैरी अभी फीमेल को ही प्रूव करना पड़ेगा या फिर जो है वो मेल को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो इंटेंट जो उसका था या नहीं था। ठीक है, तो ये अभी भी एक लीगल लूप होल है जिसका मिसयूज़ किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में रिसेंटली। ये रिप्लेस कर रहा है 67 ईयर ओल्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 को और ओवरऑल कर रहा है इंस्टीट्यूट की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। अब ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस द्वारा 1931 में। एक सोसाइटी का रजिस्टर्ड है ये, और ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जा चुका है 1959 के एक्ट जो इसका है उसके अंदर ही, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, इसके सेंटर्स अलग अलग जगह पर भी हैं। 33 मेंबर काउंसिल इसको भी गवर्न करती है, और उस काउंसिल के ऊपर एक जनरल बॉडी होती है 1000 मेंबर्स की, जिसमें कम से कम 3/4 अप्रूवल चाहिए अगर कोई रेगुलेटरी चेंज करना है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एग्जिस्टिंग सोसाइटी बेस्ड मॉडल 2 जो है बहुत ही जो है वो कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई इसमें रिफॉर्म करना है तो कोई, इसीलिए पिछले 50 साल की हिस्ट्री में इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस ही नहीं हो पाए हैं। 4th रिव्यू कमेटी ने फ्लैग किया कि ओवर रिलायंस है इलेक्शंस के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए, तो कोई मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो पाती हैं, इलेक्शन बेस्ड अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस इंस्टीट्यूट को अलाइन करना चाहते हैं बाकी के IITs और IIMs की तरह। तो अब क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं? जो ये ISI है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट बनेगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से गवर्न होगा। सब असेट्स, लाइबिलिटीज़, एम्प्लॉयज़, एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो एक न्यू स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है विजिटर हो जाएंगे इस इंस्टीट्यूट के। 11 मेंबर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक जो है वो बॉडी होगी जो प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। एकेडमिक काउंसिल जो है वो हेडेड होंगी डायरेक्टर द्वारा, इसमें कुछ सीनियर फैकल्टी भी होंगी जो है हैंडल करेंगे एकेडमिक मैटर्स। डायरेक्टर जो है वो अपॉइंटेड होंगे बाय बोर्ड चेयरपर्सन, और जो विजिटर हैं वो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एम्पावर्ड होंगे कि वो डायरेक्टर को हटा सकते हैं।
अब कंसर्न क्रिटिक्स क्या रेज कर रहे हैं, सेंटर जो है उनके बाद उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ जाएगा 11 में से 8 मेंबर्स के ऊपर। जो पीरियोडिकल रिव्यूज़ हैं वो उससे क्या होगा कि डायरेक्टर जो है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट अपॉइंटी बनकर रह जाएगा। फैकल्टी, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने उनको कंसल्ट नहीं किया इस बिल को ड्राफ्ट करने में। और कोई जो बिल है उसके अंदर जो है अभी तो पिछला एक्ट है उसमें कलकत्ता या कोलकाता को एक्सप्लिसिटली नेम किया गया था इसके रजिस्टर्ड ऑफिस की तरह ISI के, लेकिन अब जो न्यू बिल है इसमें कोई मेंशन नहीं है हेडक्वार्टर का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाइट्रोसमाइंस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया कि पैकेज फूड्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अब केमिकल्स आ चुके हैं नाइट्रोसमाइंस नाम के। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्काइल और एराइल ग्रुप दोनों आते हैं। अब ये कंपाउंड जो है वो तब बनता है जब एमाइन जो है वो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट होते हैं। अब ये फॉर्मेशन जो नाइट्रोसमाइन का होता है वो फूड में तब होता है जब प्रिपरेशन या स्टोरेज की स्टेज होती है, या फिर स्टमक में भी होता है। अब कंसनट्रेशन नाइट्रोसमाइंस की जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसकी फॉर्मेशन जो है वो हाई टेम्परेचर से एनहेंस होती रहती है। अब इसको हम जो है इंजेक्शन, इन्हेलेशन, डर्मल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है बॉडी में चला जाता है ये। और अगर इसके बहुत लंबे टाइम तक कंसनट्रेशन, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहे तो इससे बहुत हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, कैंसर जैसे भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MSME सस्टेनेबल Z सर्टिफिकेशन स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने प्रमोट करना शुरू किया है क्वालिटी ड्रिवन और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को थ्रू MSME सस्टेनेबल Z सर्टिफिकेशन स्कीम। ये स्कीम जो हेल्प करेगी MSMEs को इम्प्रूव करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, एनकरेज करेगी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 100% सब्सिडी देगी उनकी Z सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट आएगी उस पर। इसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सर्टिफिकेशन जो ऑफर की जाती हैं। एलिजिबल एंटरप्राइजेस जो है उनको 75% तक की उनकी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी जो है वो मिल सकती है उनको उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो है ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज भोपाल के, उन्होंने रिसेंटली इंडिया की पहली इंडिजिनस अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन जो है पिग्स के लिए डेवलप की है। ये वैक्सीन ये जो डिसीज़ है ये हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है जो पिग्स और वाइल्ड बोर को अफेक्ट करती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के थ्रू होती है ये डिसीज़ इन्फेक्ट नहीं करती ह्यूमंस को या फिर बाकी की लाइफ स्टॉक स्पीशीज़ को। अब ये जो है ओरिजिनली आपको सब सहारन अफ्रीका में देखने को मिलेगा अफ्रीकन स्वाइन फीवर, लेकिन धीरे धीरे ये बाकी कंट्रीज़ में भी फैल गया। इंडिया में पहला इसका आउटब्रेक 2020 में हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम और अरुणाचल प्रदेश में। वायरस जो है वो बहुत ही रेजिस्टेंट है, इसलिए जो है क्लोथ्स, बूट्स, व्हील्स, बाकी के मटेरियल सब पर रह लेता है और ये इवन कई तरह के पोर प्रोडक्ट्स में भी सर्वाइव कर लेता है। अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अभी कुछ कमर्शियली लाइसेंस्ड ASF वैक्सीन जो है वियतनाम में अवेलेबल हैं। इंडिया में जो है ये पहली जो है डेवलप की गई है वैक्सीन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने 200 प्रीवियसली अनडॉक्यूमेंटेड माइक्रोबियल स्ट्रेन्स को अनकवर किया है। दिखाया गया है कि जो एक हेल्दी गट है वो डाइट, ज्योग्राफी, स्टाइल से जो है शेप्ड होता है, इसलिए इंडिया को एक अपना माइक्रोबायोम मैप बनाना ज़रूरी है। तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था फैसिलिटेट करने के लिए सेल बायोलॉजी रिसर्च कंट्री में। अब इसका कैंपस जो है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट का जो ओरिजिन अगर हम देखें 1986 का जो नेशनल टिश्यू कल्चर फैसिलिटी है उसमें से हम इसको ओरिजिन हम देख सकते हैं। अब ये जो बॉडी है ये एंगेज्ड है कटिंग एज रिसर्च इन डाइवर्स एरियाज ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी में। ये इंस्टीट्यूट जो है एक नेशनल सेल रिपोजिटरी भी होस्ट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आसान कंजर्वेशन रिजर्व। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि एक डायरेक्शन जो उन्होंने दी है उससे माइनिंग एक्टिविटीज़ बैन होंगी विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि एक रामसर साइट है उत्तराखंड की। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड के। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ आसान और यमुना रिवर्स पर जो है सिचुएटेड है। आसान रिवर जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और इस कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में बनाया गया। ये रामसर साइट बनी 2020 में और ये पहली रामसर साइट है उत्तराखंड की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑन दी ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है कंजर्वेशन ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड, एक क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान लॉन्च करते हुए। क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो एक वाइल्ड कैट है जो डेंस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज़ में रहता है और इसको ये आपको
नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और इवन सदर्न चाइना तक भी जो है देखने को मिलेगा। इंडिया में ये सिक्किम, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज़ में दिखता है। अब ये लोलैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोस्टली रहते हैं। आर्बोरियल और नॉक्टर्नल इनहेबिटेंट्स हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN रेड लिस्ट में। अब जो लेपर्ड कंजर्वेशन प्लान बनाया गया है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GEF और UNDP के साथ मिलकर बनाया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, जिसमें 14 प्रायोरिटी कंजर्वेशन लैंडस्केप्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक मॉनिटरिंग, कैमरा ट्रैप्स, ऑक्यूपेंसी सर्वेज, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल DNA को के थ्रू। इसमें ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन भी किया जाएगा नेबरिंग रेंज कंट्रीज़ के साथ। So now let us see all these topics in English. So the first topic is domestic cruelty protection to live-in couples. This topic is important for your social issues. So the Supreme Court has ruled that protection against domestic cruelty under criminal law, which currently is available to married women under section 498A of IPC, now extends to women who are in live-in relationships as well. So now IPC has been replaced by BNS, so therefore section 85 of BNS will be applicable. So erstwhile IPC had section 498A, which penalizes a husband or his relatives for subjecting a woman to cruelty. Because this provision explicitly uses the word husband, its application was traditionally limited to legally valid marriages only. Over the years, Supreme Court had expanded this to cover men who induced a woman into a legally void or voidable marriage. So the accused man usually sought to quash a section 498A case filed by his partner, arguing that the marriage was invalid since he was already married to someone else. But Karnataka High Court rejected this in one case, ruling that a man who induces a woman to believe she is lawfully married to him cannot evade criminal responsibility. So the Supreme Court rather addressed the broader question: can a man in a live-in relationship be prosecuted under section 498A? So Supreme Court adopted a purposive interpretation, holding that since the law's original objective was to deter domestic cruelty, it must adapt to changing social realities. Okay. Court also held that denying criminal law protection to a cohabiting woman while granting it to a married woman has no rational nexus. So both the petitioner and the union government argued that unmarried women are already protected under the DV Act of 2005, but court rejected this, saying that DV Act is primarily a civil legislation, while section 498 is a criminal provision. So there is one legal loophole which is still valid, which is still going on, which upon which the court has not clarified anything. So the fact that to determine which live-in couples qualify for this protection, court has borrowed the concept of a relationship in the nature of the marriage from the DV Act only. So in a 2013 judgment, court had reiterated features of such a relationship, that pooling of financial resources must be there, shared domestic arrangements must be there, a sexual relationship must be there, and they must be holding out themselves to society as spouses. But the most important requirement is the couple must also possess an intent to marry. And many relationships may satisfy all of the previous criteria, but the partners may never intend to marry. Without this intent, the relationship cannot be equated with marriage. Okay, so initial burden of proof to establish this intent to marry lied with the female partner who is seeking protection. And this judgment, which the new judgment, it is not clarifying or it is not giving any concrete parameters for legally establishing this subjective intent. Okay. So the next topic is Indian Statistical Institute Bill 2026. This topic is important for your governance section. So this ISI Bill 2026 was introduced in Lok Sabha recently, and it is going to replace the 67-year-old Indian Statistical Institute Act of 1959 and overhaul the institute's governance structure. So this ISI was founded by eminent statistician PSC Mahalanobis in 1931. It is registered as a society as of now, and it has been declared as an institution of national importance. It is headquartered in Kolkata. It is currently governed by a 33-member council. Above this council sits a general body of about 1,000 members, whose 3/4 approval is needed for any regulatory change. But government is arguing that this existing society-based model is too unwieldy for meaningful reform. No significant changes, therefore, have been made to this ISI's governing instruments in the last 50 years. The fourth review committee also flagged over reliance on elections for decision-making posts rather than any merit-based appointments.
Now government is saying that they want to align this structure of ISI with other institutions of national importance like the IITs and IIMs. ISI will become a statutory body corporate with this new bill, and this will be established directly by an act of parliament. All assets, liabilities, employees, and academic programs of the existing society will transfer to the new statutory institute. The President of India will serve as the visitor of the institute. The new 11-member board of governors will be the principal policy making body. So it will also have an academic council headed by the director and comprising of senior faculty, which will handle academic matters. Director will be appointed by the board chairperson, and remember that visitor, the President of India, is empowered to remove the director. So these are certain concerns raised by the critics. So the center will have direct or indirect influence over 8 of the 11 board members. So provisions for periodical reviews are being seen as reducing the director to a government appointee only. Faculty, students, and researchers are arguing that bill was drafted without the wider stakeholder consultation. And unlike the 1959 Act, which explicitly names Calcutta or Kolkata as the registered office of ISI, new bill omits any mention of the headquarters. Okay, so there is a apprehension that this body will be relocated later on. So the next topic is nitrosamines. This topic is important for your science and tech section. So recently it was observed that packaged foods, pharmaceuticals, industrial products, and global supply chains contain chemicals known as nitrosamines. These are organic compounds which contain alkyl and aryl group with the nitrogen and oxygen group. So these compounds get formed when amines react with nitrites or nitrates. Formation of nitrosamine in foods occur either during the preparation or storage or in the stomach. The concentration of nitrosamines tend to increase over time, and their formation is enhanced by high temperatures. So human exposure to nitrosamines occur through ingestion, inhalation, or dermal contact, and these compounds, even at low concentrations over long-term exposure, has been linked to potential health risks, including cancer. Okay. So the next topic is MSME Sustainable Z Certification Scheme. This topic is important for your economy section. Ministry of MSME is promoting quality-driven and environmentally sustainable manufacturing through MSME Sustainable Certification Scheme. So this scheme aims to help MSMEs improve manufacturing processes. So the focus is on encouraging women entrepreneurs, with the government providing a 100% subsidy on the cost of Z certification for women-owned MSMEs. Z framework offers bronze, silver, and gold certifications. Eligible enterprises can avail financial assistance of up to 75% of the cost of testing. Okay. So the next topic is African swine fever. This topic is important for your environment section. Scientists at the ICAR, National Institute of High Security Animal Diseases, have developed a first indigenous vaccine of India for the ASF for pigs. So ASF is a highly contagious viral disease affecting pigs and wild boar. It is caused by the African swine fever virus. So the disease does not infect humans or other livestock species. It was originally found throughout the sub-Saharan Africa, but now it is prevalent in many countries of Europe, Asia, and Africa. India notified the first outbreak of ASF virus in 2020. This virus is highly resistant in the environment, therefore it can survive on clothes, boots, wheels, and other material. It can also survive in various pork products as well. Currently, there is no treatment available against this disease, and a couple of commercially licensed ASF vaccines are available in Vietnam, but India has developed the new indigenous vaccine just now. So the next topic is National Center for Cell Science. This topic is important for your science and tech section. So the National Center for Cell Science has uncovered about 200 previously undocumented microbial strains, showing that a healthy gut is shaped by diet, geography, lifestyle, and why India needs its own microbiome map. So NCCS is an autonomous organization aided by the Department of Biotechnology. It was established to facilitate cell biology research in the country. It is located on the campus of Savitribai Phule Pune University. The institute traces its origin to the National Tissue Culture Facility of 1986. NCCS is engaged in cutting-edge research in the diverse areas of modern cell biology. This institute also holds a National Cell Repository. So the next topic is Asan Conservation Reserve. This topic is important for your environment section. Supreme Court has recently clarified that a direction banning mining activities within a 10-kilometer radius of the Asan Wetland Conservation Reserve, which is a Ramsar site in Uttarakhand, would apply to other wetland conservation reserves across the country as well. So Asan Conservation Reserve is located in the Dehradun district of Uttarakhand. It is situated at the confluence of Asan and Yamuna rivers. Asan River flows in a west to east direction.
It was declared a conservation reserve in 2005, and it was declared a Ramsar site in 2020, which is the first Ramsar site in Uttarakhand. So the next topic is clouded leopard. This topic is again important for your environment section. So on the occasion of International Clouded Leopard Day, India has reaffirmed its commitment to the conservation of clouded leopard through the newly launched Clouded Leopard Conservation Action Plan. So clouded leopard is a wild cat inhabiting dense forests of the Himalayas. It is found from Nepal, Bangladesh, India through Indochina to Sumatra, Borneo, and even southern China. So in India, it is found in Sikkim, northwest Bengal, northern Bengal, West Bengal, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Assam, Nagaland, and Arunachal Pradesh. They prefer to live in lowland tropical rainforests. They are arboreal and nocturnal inhabitants, and they are vulnerable in IUCN Red List. So this Clouded Leopard Conservation Action Plan is prepared under the Government of India GEF UNDP initiative. It provides a comprehensive framework for securing habitats. So 14 priority conservation landscapes across Northeast India have been identified. CAP provides for standardized scientific monitoring, like through the camera traps, occupancy surveys, genetics, and environmental DNA. It also encourages transboundary cooperation with neighboring range countries. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.